प्रेस करने वाली बिना नहीं मिलती। बिल्कुल ये तो जाएंगे तो हमारे कपड़े का दूंगा और हम लोग थक भी जाएंगे। very good. This is the main reason. And because the scarcity of drinking water is so less. So recently what happened? And one more thing, if your bottle is filled, so do not throw that bottle. First finish it, then you come for filling it. देखिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और टीचर्स आपको कितनी बार बोलते हैं इनफैक्ट लड़के भी आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि बेटा ठीक से बैठो अभी स्कूल में यू स्टार्ट लाइक 6-7 hours at school okay you sit and you write you learn here most of the time you spend here sitting so it matters a lot that how you sit at your benches in school okay so my concern is about that only you should sit properly because it affects your body your focus your writing a lot. Okay, scientifically, researchers have proven it that your posture matters a lot. Okay, now you see how this student is sitting. See, legs out. See, बेटा प्लीज पैर अंदर करो. अगर आप नानी यहाँ से जाएंगे या कोई भी यहाँ से जाकर गिर जाएगा ना, आप लोग ऐसे पैर बाहर निकाल के बैठे रहते हैं. होता है ना? ठीक है? And see, your back will bow down. That must be कैसे रहना चाहिए? कैसे ठीक से बैठना चाहिए? देखो बच्चों, ऐसा होगा कि काफी ठीक बैठ रहे हैं. हाथ ऊपर रखिए, बेंच पर. Back should be अरे उस पे क्या बना रही हूँ? मैंने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ था, मैं तो बस उसके ऊपर ऐसे लाइन लगे. नहीं मैंने देखा भी बनाया, मैं आपको बता दूँगी. नहीं मैम को मैंने भी देखा तुमने अपने सीट के नीचे रोटी छोड़ी हुई है, वो देखो ये देखो. हमारी मेरी नहीं है, कल जो बच्चा यहाँ बैठा था उसकी है. No, I know you very well. Today you brought Loki in your tiffin and she doesn't like Loki. So उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने Loki डस्टबिन में फेंक दिया और रोटी यहाँ. I will tell. क्या नाम बोला? मैं एक काम करती हूँ, मैं बताऊँगी तुम्हारी शिकायत, तुम मुझे बताओगे. ठीक? Okay. Let us continue. This is action. अब इसका reaction देखते हैं. We have Jeevan aunty for the reaction. Come Jeevan. कितना उनका बच्चे करते हैं मैं बहुत अच्छा करती हूँ कितना उनका करते हैं बड़ी ऐसी मैं तो मूवी को करी मुझे तो भी बड़ी ऐसी अब बताओ बच्चे बर्बाद करते हैं तो हम कैसे मेहनत कर बना के देती है कहीं बच्चे हमारी होती बहुत आते हैं बहुत गंदा करते हैं बच्चे. Thank you, Jeevan. So you saw an action and a reaction. So do you understand क्या होता है आपके action से? वो लोग those who cannot afford one time meal and then look at you people. मम्मी के पास सारी की सारी under the desk. There are some students who are complaining about their stuff missing here and there. Some says that person to take the stuff. Some says that has taken. You blame each other. Is that true or not? So my dear students, when we point out a finger or when we complain about someone, first of all, what we have to keep in mind that when we are complaining about someone, when we are pointing to someone, one finger is pointing towards that person and these four, are you able to see? And these four or three fingers are pointing towards ourselves. So when my students we are complaining, we have to look into ourselves that what we are doing. Okay? Before complaining, we have to check our behavior, our attitude, our alertness, and our habits. When all these things are correct, appropriate, then we have a right to raise a complaint that ma'am, this is happened. Now I am going to see that Sandhya ma'am has explained that what are the issues. Now we are going to tell you the real situations that are going in the class. Now you come into the class, when we enter, you come and say, ma'am, मेरा ये सामान गायब है, ma'am, मेरा ये सामान गायब है, ma'am, किसने लिया, ma'am, उसने लिया. The game of blame is on. Yes or no? So my dear students, first of all,